And the big story on this newscast, Manishankar Aiyar has done it again. Now, for the second time in these elections, the former UPA minister and key aide of late former Prime Minister Rajiv Gandhi has made a statement on another of India's hostile neighbours. Speaking about China at the launch of a book called Nehru's Final Recruits, Aiyar used the refrain allegedly, while describing China's invasion of India. He said that in 1962, China allegedly invaded India. At the very same sitting, Aiyar was questioned about this remark. And at this point, he gave a long-winded justification that was not a retraction, but claimed that he shouldn't have said it because it was election season. Now, take a look at Aiyar's initial remark and his so-called clarification. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. There are various books which indicate that we could have accepted Zhou Enlai's proposal of April 1960. We could have perhaps avoided war by backing up our forward policy with adequate military strength to be able to open those forward posts. And you will recall that Nehru had said that I had ordered the Indian army to throw out the Chinese from the Tatra Ridge. And there was a kind of riposte that came from the Chinese. So I used the expression alleged, but I shouldn't have done so. Yes, it is an I shouldn't have done so because we're in the middle of an election. Now, what Manishankar Aiyar is glossing over, unfortunately, is a clear invasion by China, not just along one but two fronts that were thousands of kilometers apart in Ladakh and in Arunachal Pradesh. Here's how it had unfolded over almost a decade of the Nehru years. In 1954, India and China signed the Panchsheel Coexistence Agreement, from when the Hindi Chini Bhai Bhai became a popular slogan. Now, China then proceeded to tell Nehru it doesn't covet India's territory despite its maps routinely included Bharat's land. The whole time, China built a road through what would later become Aksai Chin. India then provoked China back by granting asylum to the Dalai Lama, who escaped years after China's annexation of Tibet. By 1962, skirmishes had begun and China had begun forward patrols that also saw it occupying dominant positions. Now, in October that year, China launched a full-blown invasion reaching Rezangla in Ladakh and Tezpur in Assam, with Indian forces being forced to withdraw. A month later, in November, China unilaterally announced a ceasefire and returned to its claimed map positions, making away with thousands of square kilometers of Indian territory. Now, Times Now's Pranesh Roy confronted Manishankar Aiyar about his remarks. Take a look. Morning, Mr. Aiyar. How are you? I'm all right, sir. I just wanted to ask you, why do you always give a clean sheet to Pakistan and China? This is Pranesh from Times Now, sir. Who? Pranesh. My name is Pranesh. I'm calling from Times Now. I just wanted to ask you, why do you give a clean sheet to Pakistan and China? No answers there. The Bharatiya Janata Party has picked up on Aiyar's controversial views, while the Congress has distanced itself. Now, Jairam Ramesh has attempted damage control by incorrectly citing that Aiyar has apologized, whereas a closer inspection reveals that he actually just justified himself. Ramesh also cited Manishankar Aiyar's age as a defense. Aiyar is 83. Now, the Congress has in turn accused Prime Minister Modi of wrongly claiming no invasion happened in 2020 before Indian and Chinese troops clashed in eastern Ladakh. But the BJP has raised other points too to ask why there is such love in Congress for China. Amit Malviya has cited that Nehru gave up India's permanent UNSC seat for China. Rahul Gandhi signed a secret MOU with China's ruling Communist Party.
party. The Rajiv Gandhi Foundation accepted Chinese funds and gave pro-China economic reports, as a result of which Sonia Gandhi-led UPA allowed Chinese goods in India. And now he goes on to say that Manishankar Aiyar has whitewashed China's 1962 invasion, based on which China has been squatting on 38,000 square kilometers of Indian territory. ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पहले भी कहा था श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को हस्तक्षेप करके मदद करनी चाहिए। अब चीन को सिग्नल दिया जा रहा है कि देखिए, हमने तो आपके ऊपर जैसा एमओयू राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे चीन के साथ, वैसा ही किया है, अब तो हमारी मदद करो। इधर चीन को सिग्नल, उधर पाकिस्तान को सिग्नल। श्री मणिशंकर अय्यर का बयान चीन को क्लीन चिट देने जैसा है, जबकि ऐतिहासिक तथ्य है कि चीन ने 1962 में हमारी गुटनिरपेक्ष नीति को हथियार बना करके भारत पर हमला किया था। ये एक हार्ड फैक्ट है कि जब जब कांग्रेस होती है हमारा देश खंडित भी होता है और टुकड़े टुकड़े भी होता है। घुसपैठियों को बड़ा सुकून सा मिलता है, अनुकूल होता है उनके। और आपने देखा होगा, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन्होंने दिया है, चाइना की जो जिन जगह चीनी की जगह है बॉर्डर की, वो इन्होंने दी। तो इसलिए जो भी भाषा बोलते हैं वो चाइना को खुश करने के लिए बोलते हैं, पाकिस्तान को खुश करने के लिए बोलते हैं। कोई आतंकवादी मारा जाता है तो पाकिस्तान से ज्यादा इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, पत्थर चाइना पे पत्थर मारने वाले लोग हैं। तो इनका मन की सच्चाई कई बार इनके निकलती है और ये बेकार कहते रहे कि हमारा विचार नहीं है। आपके विचार क्या है? ये आपके लोग बोलते हैं ये तो आपके विचार है। आप Now you heard how the BJP and its allies are stepping up the attack on Congress over Manishankar Ayyar's comments. The Congress and its allies too have responded. They're attempting to play down the remarks and they're also hitting back at the BJP. नहीं, देखिए, तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है, ये व्यक्ति का बयान हो सकता है मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर जी कोई अधिकृत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, तो ये बयान कांग्रेस पार्टी का नहीं माना जा सकता है। ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान तो वही बताएंगे किस संदर्भ में उन्होंने कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, कैसे कहा, ये उसकी जानकारी तो वही देंगे कि उन्होंने किस भावना से किया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का स्टैंड है और कांग्रेस ने ही चाइना को माने में पराजित किया था। उन्होंने माफी मांग ली और मणिशंकर जी कांग्रेस के न स्पोक्समैन हैं, ना वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, ना सांसद हैं। जब उन्होंने माफी मांग ली तो फिर बात क्या रही? The fact is known to everybody, and that is settled after a war with China. So anybody, should be careful to stick to the historical fact. And I do not know what Manishankar said. He is not even a now leader. He is now a retired person. Whatever he says, it is not considered a political opinion. ये अलेजडली क्यों यूज़ हुआ? एक फुल फ्लैज जंग हुई पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में 1962 में, जिसमें हिंदुस्तान के नौजवानों ने, आर्मी ने बहुत से नौजवानों की शहीद हो गए। बीजेपी वाले हैं वो जब ये कहते हैं कि देश प्रेम सिर्फ वही जानते हैं, इनको चाइना से प्रेम है, पाकिस्तान से प्रेम है, तो ये वो देखें कि 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से किसने किए। दलाई लामा जो इंडिया में रहा तो किसने शेल्टर दिया, वो अगर उस वक्त किसने ये किया। ये बहस उस चीज़ पे हो जाए कि मुल्क की इकानमी आज कैसी है और पहले कैसी थी। Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो। 4 जून 2024 ये तारीख
भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.